लो 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 लो। हाँ जी भाइयों बहनों, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। लो जी, करें कंटिन्यू राइटिंग। यस, चल। हाँ जी, सो कल कुछ क्वेश्चंस लिखे थे हम लोग, कितने, 5-6 क्वेश्चंस लिखे थे कल। क्या हो रहा है यार, 6, ओके, परफेक्ट। एल ओ डी आर कंटिन्यू, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, अभी तो इसी के लिखेंगे। ठीक है, लो भाई, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, क्वेश्चन 47 चेक करें अब जरा। 47 पढ़ते हैं, 6 लिखे ना, चलो आज भी लिखते हैं 6-7। Mr. P is working as managing director in ABC Company Limited. He holds following chairmanship directorship in the following, है ना, तो ये following chairmanship और directorship दी हुई है। Mr. P, who is already a managing director of ABC Limited. Now he is also whole-time director in XYZ Limited. So basically दूसरी एक और कंपनी है जिसमें he is a whole-time director. So in short, he is holding whole-time position in 2 companies, right? KMP positions भी 2 हो गई, और अगर आप ऐसे देखो तो होल टाइम पोजीशंस भी आपकी 2 हो गई, बिकॉज WTD और MD दोनों के दोनों आपकी KMPs माने जाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इन KLM लिमिटेड, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, सो यहाँ पर 3 होल टाइम पोजीशंस हो गई, 3 KMP पोजीशंस हो गई, एंड ही इज द मेंबर ऑफ NRC ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम ऑन द लिमिट ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। अच्छा, अब ये सुनना, इसमें ना थोड़ा सा कंपनीज एक्ट वाला भी अर्क है। So basically the rule says, यहाँ तीनों जगह MD WTD ऐसे ही मेंबर ऑफ NRC, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टरशिप के बारे में बात करते हैं। सो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम एज पर द एक्ट 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, जिसमें से पब्लिक में नॉट मोर देन 10। एनीवे वो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या रेलेवेंट है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम होल्ड टाइम पोजीशंस या KMP पोजीशंस 2 कंपनीज में होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो आपकी मैक्सिमम KMP पोजीशंस कितनी हो सकती है, 2, राइट। मैक्सिमम कितनी अलाउड है, 2। अब यहां पर ही इज ऑलरेडी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्या बोलते हैं इसमें ABC लिमिटेड, और उसके अलावा ही इज ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ KLM एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ XYZ। सो टोटल 3 KMP पोजीशंस हो गई, राइट, इसकी, विच इज नॉट अलाउड। मेंबर ऑफ NRC, ही कुड ऑब्वियसली बी, देयर इज नो प्रॉब्लम, NRC का मेंबर है अगर, तो दैट इज अलाउड। वो एनीवे कमिटी पोजीशंस में काउंट करते करते, कमिटी पोजीशंस आपने कल पढ़ा था, ऐसे कितनी अलाउड है, टोटल 10, और चेयरमैनशिप्स कैन नॉट एक्सीड 5। उसमें से भी हम लोग जब कमिटी पोजीशंस की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमिटी और NRC कंसिडर, सॉरी SRC कंसिडर करते हैं, वी डोंट कंसिडर NRC एंड RMC, उसकी पोजीशंस हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, है ना। मैक्सिमम 2 में KMP, थर्ड में ग्रुप का है, और सेकंड में ग्रुप का प्रोफेशन है, हाँ ठीक है, चलो वो भी बता देता हूं। अच्छा, मैक्सिमम KMP पोजीशन वैसे एक एक्सेप्शन, दो अगर है आपकी, तो आपको ये इंश्योर करना है कि पहला, या तो दोनों कंपनीज होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप है, या फिर सेकंड कंपनी ने के बोर्ड ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया टू अपॉइंट दिस पर्सन एज अ होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और एज अ KMP, ठीक है। सो सेकंड कंपनी का यूनानिमस, क्योंकि इसमें होल्डिंग सब्सिडी ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब आंसर लिख लेते हैं जल्दी से, लिखो भाई। फर्स्ट पॉइंट, in terms of the provisions of Companies Act 2013,
5 मार्क्स है ना, ठीक है. In terms of the provisions of Companies Act 2013, Companies Act 2013, comma, an individual can hold KMP position in one company, can hold KMP position in one company in one company. However, he could also be he could also be holding KMP position in two companies, also be holding KMP position in two companies, provided both the companies are holding and subsidiary companies, both the companies are holding and subsidiary companies, or both the companies are holding and subsidiary companies, or the second company or the second company's board, ऐसे लिखेगा, second company's board has passed a unanimous resolution. Second company's board has passed a unanimous resolution for appointment of such a person as its KMP. Such a person as its KMP. As its KMP. Next point. In the present case, Mr. P is working as managing director of ABC Limited, comma, KLM Limited and XYZ Limited. ABC Limited, KLM Limited and XYZ Limited. ABC Limited and XYZ Limited. Full stop. Since he is holding three such positions, he shall have to vacate three such positions. He shall have to vacate
he shall have to vacate his office as a KMP from one of the companies. As a KMP from one of the companies. From one of the companies. One of the companies. Done. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लें. While counting the committee positions, committee positions of only committee positions of only audit committee, only audit committee only audit committee and stakeholders relationship committee, audit committee and stakeholders relationship committee is taken into consideration. Stakeholders relationship committee is taken into consideration. Therefore, he could continue to hold membership of NRC of ABC Limited. एक मिनट देना दोस्त. चलो. हाँ भाई, और क्या बोले सर आप? चिराग सर की सैलरी. अबे चेली, तेरे को पता है वो कितने लेके जाता है? हाँ, चिराग सर की सैलरी. कल में कोरोना आ गया, उनकी बात सुन के 1-0 और उनकी सैलरी में बढ़ा दीजिए. साले सुअर, भाग यहाँ से. तुमको पता है कितने जीरो लगे हुए हैं उसके एक डिजिट के आगे? और चिराग का भाव भाई हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है यार. क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, people from Thailand and Russia don't earn this much, that much this boy earns by being here on stage in front of camera. कैसी बातें कर रहे हो? कैमरा के सामने होते हुए इतना कमा रहा है वो. सोचो, जहां कैमरा नहीं होगा वहां क्या आग लगा रहा होगा. क्या तुम भी यार. हाँ भाई, और क्या? I've invested in RVNL. What are chances when it will increase? बहुत जल्दी में, भरोसा रखो. 6-0 लगे होंगे भाई. कैसी बातें कर रहा है? 6-0 में तेरे को लगता है इतना बड़ा आदमी टिकेगा अपने पास? चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं.
ओके, हाँ यार ये चेक करना एक बार, पेज 48 क्वेश्चन 40। पेज 48 क्वेश्चन 40, ये चेक करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कल थोड़े से और स्केल अप वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, है ना, मैं धीरे 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 वो कर रहा हूँ, नहीं तो पहले ही दिन भाग जाओगे तुम लोग। इनसाइडर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं लोग, हाँ ना यार, देखो जरा, वो भी विदाउट ग्रीन टी कैसे चलेगा। E-voting by the shareholders in respect of all shareholders resolutions is at a negligible level. SEBI has made certain changes in its regulations to make it more effective. Explain the initiatives taken by SEBI. अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है ना टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज के लिए, आप तो सबसे पहले टर्म आपने कम कर दिया है कि इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स द एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, और दूसरा उन्होंने अब कहा है कि जो वोटिंग रिजल्ट्स है आपको 2 दिन के अंदर एक्सचेंज के पास डिस्क्लोज करने हैं, और उससे ज्यादा आपको वन वे लाइव वेबकास्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी। सो बेसिकली यू विल हैव टू फोकस अपॉन वन वे लाइव वेबकास्ट फैसिलिटी इन केस ऑफ द एजीएम, सो देयर कुड बी मोर शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन, है ना। सो ये एसेंशियली इसके अंदर आपको लिखना है। और ईवोटिंग का आइडिया बेसिकली ये था कि आप अगर जनरल मीटिंग फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते तो घर बैठे बैठे एटलीस्ट अपना वोट कास्ट कर दो, उससे दैट यू शुड हैव सम से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी ओवरऑल, है ना। ठीक है, सो लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, as per SEBI LODR regulations, as per SEBI LODR regulations 2015, as per SEBI LODR regulations 2015, LODR regulations 2015, it is obligatory for top listed 100 entities. It is obligatory for top 100 listed entities to provide the following to its members. To provide the following to its members. अब इसमें लिखते जाए, A, hold the AGM within, hold the AGM within hold the AGM within 5 months from the end of financial year instead of 6 months. 5 months from the end of financial year instead of 6 months. Second, e-voting results to be declared to the stock exchange. E-voting results to be declared to the stock exchange. CMSL से तुम्हें सारे टॉपिक्स सॉर्ट है? हाँ जी मैम। एग्जाम के पहले कम से कम 2 बार पढ़ना। ओल्ड के लिए ही लिमिट है क्या मैम? रेगुलेशंस तो सेम है ना, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद इन 2 days from the date of the AGM. C, to provide one-way live webcast facility to its shareholders. One-way live webcast facility to its shareholders. Next point. All these initiatives were taken by SEBI. All these initiatives were taken by SEBI in order to increase shareholders participation in order to increase shareholders participation increase
shareholders participation in the overall decision making of the company, these initiatives were taken by SEBI. These initiatives were taken by SEBI so that initiatives were taken by SEBI so that more and more shareholders could participate. More and more shareholders could participate, and decision making could be improved. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन 33 एक बार चेक करना. ये सेम है, अभी आपने जो लिखा है अलग तरीके से पूछा हुआ है. चेक करो. प्रीतम लिमिटेड इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज of which financial year closes on 31st March 22. The company had its AGM on 10th of September 22 and provided e-voting facility to its shareholders. तो टॉप 100 है, AGM इसने होल्ड की 10 सितंबर को, 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगस्त हो गया. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31st अगस्त तक करनी थी. मीटिंग कब होल्ड की इन्होंने? 10 सितंबर को. तो मतलब दे सरपास द डेट. वेदर द एक्शन ऑफ प्रीतम लिमिटेड इज टेनेबल? नो. 31st अगस्त तक करनी थी. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजीएम? अभी जो हम लोगों ने 3 रूल्स लिखे वो आपको लिखना है यहाँ पर. कैन प्रीतम लिमिटेड प्रोवाइड रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटीज टू इट्स शेयर होल्डर्स एज पर द एक्ट? यस. हर लिस्टेड एंटिटी को इट इज मैंडेटरी दैट दे प्रोवाइड रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी, मतलब मेंबर्स घर बैठे बैठे वोट कास्ट कर सकते हैं. व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू द स्टॉक एक्सचेंज? 2 days. है ना, सेम क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से पूछा हुआ है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना. क्वेश्चन 34. ये 3-4 लाइन से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे लिख लेते हैं. डॉक्टर ग्रेस aged 78 years was appointed as non-executive director of PQR Limited, which is a listed company, by passing an ordinary resolution. अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि if someone is aged above 75 years, in that case the person could only be appointed by way of a special resolution and not ordinary. Examine the validity of appointment to Dr. Grace. So it's not a valid appointment. It would require prior permission of shareholders by way of a special resolution. है ना, लिख लो. As per SEBI LODR regulations 2015, as per SEBI LODR regulations 2015, appointment of any non-executive director, appointment of any non-executive director any non-executive director above the age of 75 years, non-executive director above the age of 75 years, require approval of shareholders, by way of a special resolution. Full stop. Next point. Since in the present case
present case, Mr. Grace, aged 78 years, Mr. Grace, aged 78 years, is appointed 70 years is appointed by way of an ordinary resolution, comma, the appointment is held to be invalid, and would require approval by way of a special resolution, along with an explanatory statement, recorded in writing, with the notice of the AGM, with the notice of the general meeting लिखना, AGM मत लिखना, with the notice of the general meeting. ठीक है? चलो, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 35 चेक करें. निकुंज, an IT professional from reputed engineering college, was appointed as an independent director of a listed entity. Due to some health issues, he resigned from the company 8 months back. 8 महीने पहले छोड़ के गया. Now the company desires to appoint him as an executive director on the board. उसी को कंपनी अपना ईडी बनाना चाहती है, फुल टाइम डायरेक्टर बनाना चाहती है. हो सकता है क्या? बोलो भाई जल्दी से. इज दैट पॉसिबल? अलाउड है क्या? आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 8 महीने पहले रिजाइन करके गया है, अब कंपनी उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना चाहती है. पॉसिबल है क्या? यस. नहीं कर सकती? बहुत बढ़िया. व्हाट वुड यू रिक्वायर? 1 साल का गैप है ना, एटलीस्ट 1 ईयर्स गैप. ठीक है, परफेक्ट. ओके, लिख लो भाई जल्दी से. As per SEBI LODR regulations 2015, as per SEBI LODR regulations 2015, comma, any person appointed to the board of the company as an independent director, and the one who's stepped down, who's resigned, लिख लो, who's resigned as an independent director,
cannot be appointed as an executive director of the company, cannot be appointed as an executive director of the company for a period of 1 year, for a period of 1 year effective from 1 year effective from the date of his resignation, from the date of his resignation. Next point. Therefore, in the present case, Nikunj can only be appointed as an executive director, at the expiry of 1 year from the date of his resignation. From the date of his resignation. अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा 36 और समझाना मेरे को आंसर क्या होगा इसका. क्वेश्चन 36 जल्दी से पढ़ो. हाँ भाई आया क्या ढक्कन लोगों. क्वेश्चन पढ़े. A listed company has appointed Mihir as a director on the board. The general meeting of the company has already been held prior to his appointment. उसके पहले जनरल मीटिंग होगी. What approval is required to regularize the appointment? अच्छा हम लोगों ने अमेंडमेंट्स में पढ़ा था. अमेंडेड के हिसाब से आप लिखोगे. What will be your answer if the earlier appointment of Mihir as director on the board was rejected by the shareholders? So पहला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो ऑन द बोर्ड ऑफ अ कंपनी विद इन 3 मंथ्स, है ना, 3 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ही वो कंटिन्यू कर सकता है एज अ डायरेक्टर. फर्स्ट थिंग. सेकंड, इफ द अर्लियर अपॉइंटमेंट ऑफ मिहिर एज डायरेक्टर वाज रिजेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, इन दैट केस अगर आप उसको वापस से प्रपोज कर रहे हो उसका अपॉइंटमेंट, तो इन दैट केस यू विल हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, है ना. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफर करना पड़ेगा कि क्यों आप वापस से सेम पर्सन को रीअपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना. तो ये 2 चीजें लिखनी इसके अंदर. लिख ले आंसर. चलो भाई. एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, LODR regulations 2015,
2015. If a person has been appointed as a director, if a person has been appointed as a director on the board of a company, as a director on the board of a company, ओल्ड सिलेबस की एनालिसिस है। आंटी मैं रोज बोलता हूँ कि जिस दिन रिवीजन बैच खत्म होगा उसके बाद ही दे पाऊंगा। अब आप एक बार मैसेज करो 1000 बार, माय आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। मैम टाइम तो चाहिए ना, कब करूँ मैं? मेरे रिवीजन बैचेस चलते हैं शाम तक, है ना, तो अभी वो संभव नहीं है। तो जैसे ही रिवीजन बैच खत्म होगा वो कर लेते हैं, नहीं तो एक चॉइस मैं आपको दे देता हूँ, 2 दिन के लिए रिवीजन नहीं लेता हूँ और वो बाद में करवा दूंगा, और 2 दिन पहले आपकी एनालिसिस शीट दे देता हूँ आपको। अगर वो चलता है तो वैसे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट थोड़ा सा टाइम लगता है मैम, ऐसे सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, थोड़ा एनालिसिस, मतलब एक्चुअल एनालिसिस करना पड़ता है पेपर्स का, है ना। ठीक है, चलो बाकी ओल्ड न्यू दोनों की आएगी, वो उसके लिए बेफिक्र रहना। हाँ जी। शिट यार, मैं आई लॉस्ट द ट्रैक। क्या लिख रहे थे आप, प्लीज बताओगे क्या एक बार? एक बार बस वो बता दो यार। कंपनी लोगों का डाउट है, मैक्स डायरेक्टर्स 15, अगर इंक्रीज करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, तो फिर 15 के बाद जब जब न्यू। नहीं 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 नहीं, हर बार नहीं, सिर्फ वो लिमिट ओवरऑल इंक्रीज करने के लिए कि आपने 15 की लिमिट बढ़ाकर 20 कर दी है, बाकी पॉइंट फिर आप ऑर्डिनरी से कर सकते हो। हाँ जी, ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। हाँ, comma, the same needs confirmation from shareholders, the same needs confirmation from shareholders within, needs confirmation from shareholders within 3 months from the date of his appointment by the board, within 3 months from the date of his appointment by the board. Appointment by the board. Next point. Therefore, Mihir's confirmation by shareholders within 3 months is required. Therefore, Mihir's confirmation within 3 months by shareholders is required. Is required. Next point. In case if the proposal, in case if the proposal if the proposal in case if the proposal to appoint Mihir as a director, to appoint Mihir as a director was earlier rejected by the shareholders, was earlier rejected by the shareholders, comma, then in that case, approval of shareholders
then in that case approval of shareholders would still be required, however, the notice of the general meeting, shall require the notice of the general meeting shall require notice of the general meeting shall require an explanation as to why he should be reappointed. Explanation as to why he should be reappointed. ठीक है. क्वेश्चन 37 जैसा हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया ही था. इनफैक्ट ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है मटेरियल आरपीटी के बारे में, है ना. सो 37 वापस से नहीं लिखवा रहा हूँ, हम लोगों ने क्लास में भी लिखा है. 38 देखें. सात्विक is a managing director in a listed company as well as an independent director in other 3 listed companies. थोड़ा कंफ्यूज हो गया. अच्छा, हाँ. Is a managing director in a listed company as well as independent director in other 3 listed companies. One of the leading listed e-commerce company offered him independent directorship on its board. So अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप 3 से ज्यादा नहीं ले सकता है. ऐसे नॉर्मली 7 अलाउड है, बट अगर किसी कंपनी में होल टाइम पोजीशन है तो इंडिपेंडेंट कैन नॉट एक्सीड 3 जो ऑलरेडी है. अब यहाँ पर किसी 4th कंपनी से ऑफर आ रहा है टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. वेदर ही कैन एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू सेबी रेगुलेशंस. एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट उस केस में कितनी है? 3 की, है ना. चलो लिख लो जल्दी से. एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, as per SEBI LODR regulations 2015, a person could be appointed as an independent director. A person could be appointed as an independent director in not more than 7 listed entities. In not more than 7 listed entities. Not more than 7 listed entities. Next point. However, if the person is holding whole-time directorship in one of the listed entities, comma, in that case his independent directorship cannot exceed 3. His independent directorship cannot exceed 3. Cannot exceed 3. Next point. Therefore, Satvik cannot accept independent directorship. In
this listed e-commerce company. In that listed e-commerce company. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, है ना। कितने लिख लिए आपने अब तक? 5-6 हो गए क्या? एक और लिख लेंगे अभी। 39 देखेंगे। कियान इंटरनेशनल लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी ऑन द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. It had appointed one executive promoter director in 2019 on a monthly salary only. तो आपके बोर्ड पर ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव प्रमोटर डायरेक्टर, मतलब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन शॉर्ट. द कंपनी नाउ proposes to appoint another executive promoter director. So एक और फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना है on the same monthly salary, which is fine. The aggregate annual remuneration to such directors exceeds 5% of the net profit. So वैसे टोटल लिमिट कितनी दी हुई है आपको? 5% की, लेकिन यहाँ पर अच्छा, एक को आप 5% पे कर सकते हो, अगर एक से ज्यादा है तो दो को मिलाकर 10 और किसी एक को 5 से ज्यादा नहीं, ये आपको इंश्योर करना है ना. आगे, the aggregate annual remuneration to such directors exceed 5%. Examine with respect to the SEBI regulations the relevant approval required for paying this remuneration. So shareholders का approval लगेगा पहला. If it is exceeding 5%, then to such directors. अच्छा, directors बोल रहे हैं तो अगेन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम बन जाएगा, बिकॉज आप लिमिट एक्सीड नहीं कर रहे हो. वेदर इट विल मेक एनी डिफरेंस इफ द कंपनी पेज फीस और कंपनसेशन इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड मंथली सैलरी. अगर किसी और फॉर्म में भी आप पे कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन. मंथली सैलरी की जगह आप उसे कमीशन के फॉर्म में दे सकते हो, किसी और फॉर्म में भी दे सकते हो. सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना. सर आपने कंपनी लॉ में बोला था, वैसे बाय अप्लाइंग द प्रोविजंस टू द गिवन केस ऐसे लिखना तो चलेगा क्या फिर सिक्योरिटी? हाँ जी, हाँ जी, चलेगा मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, दैट्स ऑल्सो फाइन. सो लिख लो जरा. In terms of the provisions of Companies Act 2013 and SEBI LODR Regulations 2015, दोनों के हिसाब से लिखेंगे. Companies Act 2013 and SEBI LODR Regulations 2015. Companies Act 2013 and SEBI LODR Regulations 2015. यार देख, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑर्डिनरी है, एलओडीआर के हिसाब से पूछा है क्या? अच्छा, सेबी तो स्पेशल लिखेंगे. हाँ, टू 2015. A company could pay up to 5% of its net profits, could pay up to 5% of its net profits to its managing director or full-time director. And if the company has more than one managing director or full-time director, company has more than one managing director or full-time director, comma, then a total of 10% of the net profits, could be paid to them
ensuring that to any one person not more than 5% is paid. Not more than 5% is paid. Done. Next point लिखिएगा. Therefore, the company can have two executive directors. The company can have two executive directors with a cap on the remuneration as stated above. With a cap on the remuneration as stated above. As stated above, by passing a special resolution in its general meeting. By passing a special resolution in its general meeting. Next point. The remuneration as discussed here. The remuneration as discussed here could also be paid. By way of paid by way of fees or compensation instead of monthly salary. By way of monthly salary. ठीक है, चलो कल मिलते हैं भाइयों बहनों. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. हैव अ ग्रेट डे. कीप स्टडिंग. अच्छे से मेहनत करो. बाकी कल बात करते हैं आगे डिटेल में. गॉड ब्लेस. टेक केयर. बाय.